Yes, in last lecture we already finished with the theory topics from this chapter. So let us continue with the MCQs from this chapter. Okay, so I hope you can see the screen. Okay, so read the first question from the screen. Two wires of equal lengths are placed perpendicular to the plane of the paper at a distance 5 centimeter from each other. If the currents flowing in first and second are 2 and 5 amperes respectively in opposite directions, then the resultant magnetic field at the midpoint of the both of the wires is, yes, so let us consider these two wires. Suppose this is the first one and here it is the second one, okay, which are carrying the currents in the opposite direction as it is told in this question here. So let us show the current in the first wire to be directed upwards and the current in the second wire will be directed in the downward direction. And the currents here are given already to be I1 is given to be 2 ampere and I2, that is the current in the second wire, is actually given to be 5 ampere. Okay, तो ये currents दिए हुए हैं. अब देखो हमको निकालना क्या है, the resultant magnetic field at the midpoint. Okay, that means we want to find out the magnetic field at this point here. Okay, so see here, if we just represent the magnetic fields of both of the wires, then according to right hand rule, let us say that the magnetic field at due to this first wire here will be circulating like this. So if you just see, the magnetic field will form the lines of force which are directed in this way. Okay, but if we just focus on the second wire, तो सेकेंड वायर के बारे में अगर बात करते हैं तो राइट हैंड रूल से हमको क्या पता चलता है कि द magnetic field due to the second wire will be directed in this way. So it will also form loops, but these loops will be directed in this way. So ये जो magnetic field है इस वायर का, तो वो ऐसा होगा. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखते हैं तो the magnetic field due to the फर्स्ट वायर, ठीक है, ये जो करंट I1 मतलब 2 एम्पियर वाला करंट कैरी करने वाला जो वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा होगा, दैट विल बी इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस डायग्राम. करेक्ट है, तो ऐसे रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू जस्ट सी एट द सेम पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस अनदर वायर हियर, दिस I2 दैट इज 5 एम्पियर करंट कैरी करने वाला जो वायर है, उसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, it will be directed outwards like this, outwards out of the plane of this figure. तो इस डायग्राम का जो प्लेन है दिख रहा है उस प्लेन को परपेंडिकुलर वो रहेगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. अभी ये दोनों को सामने रख के हम ये समझ सकते हैं आराम से कि these two magnetic inductions or these two magnetic fields will just be opposite in direction, and that's why we can just call this first magnetic field to be B1. Yes, and the second magnetic field, that is the magnetic field produced due to the second wire here, can be supposed to be B2 here. And now we can just be able to find out the resultant magnetic field in this case. So the resultant magnetic field we can just say B net, that is net magnetic field here at the point P will actually be B1 minus B2 or B2 minus B1, whatever it may be. Here in this case B2 will be actually greater than B1, and that's why we can just have it as B2 minus B1 in this way. Just work it out. Okay, yes, I have solved this. What is the answer? Can you find it out? See, due to straight conductor, the magnetic induction is given by the formula mu naught I upon 2 pi A, मतलब 2 pi R. करेक्ट है. सो I1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इस तरफ, सॉरी इस तरफ I2 आ जाएगा, और B1 के लिए हम ये लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 pi R, where R is going to be actually the distance
okay, at the point from the conductor. Okay, तो ये डिस्टेंस हमको ढूंढ के निकालना है जो कि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने की वजह से वो इस टोटल डिस्टेंस का आधा ही हो जाएगा। ये देखो टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं, तो इसलिए r विल बी एक्चुअली 5/2 सेंटीमीटर, where 5/2 centimeter comes out to be actually 2.5 centimeter. ये समझ सकते हो ठीक से? Okay, so if we just put these values, before that, just take this mu naught upon 2 pi r common from this whole thing, so that we can be left with this mu naught upon 2 pi r out, and I2 minus I1 will be left as it is here. And then if we just put all the values, then 4 pi का mu naught का value already यहाँ पे हमको option में दिख रहा है. So no need to put the value of mu naught at all. So just keep it as it is. Here again 2 pi r. R is going to be replaced here by 2.5 centimeter. But just don't forget again to convert this centimeter into meter. So I convert by multiplying it to -2. Okay. And I2 minus I1. I2 is 5 and I1 is 2. So that it becomes actually 5 minus 2. So in the next step, we can just get this as 2 into 2.5 actually becomes 5, right? So we can just have this as mu naught into 3 upon 5 pi into 10 raised to -2. Okay. Yes. So which option will be correct one? Just check. Maybe some mistake in the question. Okay, maybe here will be 50 सेंटीमीटर है क्या, वो क्या पता नहीं. अगर 50 सेंटीमीटर होगा तो फिर वो 25 सेंटीमीटर मतलब वो 0.25 आ जाएगा, तो वो 0.25 ऊपर जाके 4 बनेगा. ठीक है, just forget about the answer. Maybe it's a mistake is there in the question, so just understand the method. ठीक है, ये जो हमने किया तो वो हमको अच्छी तरह समझना है. b2 minus b1, try to work it out. देखो इसको अगर हम सपोज ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे जैसा कि उन्होंने दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, the wires are given to be perpendicular to the plane of the paper, right? That means the wires can be shown to be like this. So first wire will be carrying the current in the inward direction, okay, and the second wire will be carrying the current in the outward direction here in this way. So because of that, the suppose ये पहला जो वायर है जो करंट इनवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ काम करेगा, और ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये कैरी कर रहा है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जिनकी वजह से ये B1 और B2 अगर उसको हमने बोल दिया तो हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा ताकि हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल जाए. ठीक है, तो ये हमको समझना है. Let us see the next question. A proton moving with the velocity 2.5 into 10 raised to 7 meter per second enters in the magnetic field of intensity 2.5 Tesla at an angle 30 degree with the magnetic field. The force acting on the proton is, yes. So that means suppose there is a magnetic field
which is directed inwards into the plane of this paper. And suppose that the proton is moving in this magnetic field. या चलो मैग्नेटिक फील्ड जो है तो वो हम ले लेंगे टू बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है सपोज. Okay, suppose this is the magnetic field and a proton is just moving not at right angles but at an angle 30 degree. ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल करके एक प्रोटॉन इस तरफ दौड़ रहा है. सपोज दिस इज द प्रोटॉन. And suppose this proton is just moving in this magnetic field by making an angle of 30 degree with this field here in this way. तो इस डायरेक्शन में अगर ये प्रोटॉन जा रहा है तो अभी ऐसे हालत में कितना फोर्स इस प्रोटॉन के ऊपर काम करेगा तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. That means the velocity of the proton is going to be making an angle of 30 degree with the magnetic field, right? So we have a standard formula for this situation, that is F is equal to Q V B sin theta, correct है. तो ये फॉर्मूला, तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा Q, that is the proton, charge on proton, which is actually given by charge on electron only, which is actually 1.6 into 10 raised to minus 19. You should know it. Okay, into velocity of the proton, which is already given to be 2.5 into 10 raised to 7. You can just put it here. तो यहाँ पे 2.5 into 10 raised to 7 हमने डाल दिया. और B जो है magnetic induction, which is given to be 2.5 Tesla, which is to be put here, and sine of angle theta, where theta is given to be 30 degree here. So we can just put it as it is, and then we can just be able to get this multiplication here. So 1.6 into 2.5 कितना बनता है देखो ठीक से. हमको ये पता है कि 25 into 16 कितना बनता है 400, right? So it will be 4 into this 10 raised to minus 19 into 10 raised to 7, just condense into 10 raised to minus 9 here, right? So this is 10 raised to minus 9, and this 2.5 is just kept as it is here, and sine of 30 will be half only. So here it is going to be half here. Again, we can just say that this 4 into 2.5 comes out to be 10 actually. So in this way, we can get this as 10 upon 2 into 10 raised to minus 9, which gives simply 5 into 10 raised to minus 9. Okay, Newton. This is actually going to be the force. 5 into 10 raised to minus 9 Newton. It should be 10 raised to minus 9 here. Just make it correct. Let us do the next question. A cyclotron is operating at a frequency of 12 into 10 raised to 6 hertz. Mass of deuteron is given to be 3.3 into 10 raised to minus 27 kilogram, and the charge on deuteron is same as the electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And to accelerate the deuteron, magnetic field of necessary magnetic field is, okay, to accelerate the deuteron, the necessary magnetic field is to be found out. Okay, so see here, magnetic induction is to be found out, mass of deuteron is given, charge on deuteron is given, and frequency is also given. You know what is the formula for frequency of charged particle in the cyclotron? It is simply QB upon 2 pi m. If you just remember, this is the formula for frequency, because the period is given by the formula 2 pi m upon QB. याद है सभी को? तो इसके वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा.
if we just put all the values here, then we can just be able to get the final answer, that is Q, where Q is nothing but the charge, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb into B is going to be found out. तो ये पे B हमको निकालना है, so क्यों ना फिर ये B के लिए अरेंज कर लेंगे, it will be better. So B के लिए इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 2 pi m into f upon q simply. So ये हमको करना है. तो अभी देखो 2 into pi means 3.14 into m, that is mass of deuteron, which is given to be 3.3 into 10 raised to minus 27. Okay, and here it is frequency of deuteron, that is 12 into 10 raised to 6 here, and the charge, which is 1.6 into 10 raised to minus 19. Now see, remember here that we don't have to calculate the final answer most accurately. बहुत ज़्यादा accurate निकाल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है. हमको approximate answer भी मिलेगा तो भी चलेगा, but we have to solve it quick. जल्दी हमको करना होगा. तो अभी देखो ये 10 raised to minus 19 जो है, तो it will go up and it will become 10 raised to plus 19. And we'll just cancel with this 10 raised to minus 27, leaving behind 10 raised to minus 8 as it is. So 10 raised to minus 8 and 10 raised to plus 6 will just get combined and will become 10 raised to minus 2 here as a final. So यहाँ पे 10 raised to minus 2 जो है वो बचने वाला है न्यूमरेटर में, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या बचेगा देखो ठीक से. You want to find out P here. So ऊपर में देखो क्या बच रहा है. तो 2 into 12 becomes actually 24, and if we just remove the decimal point from 3.3 and 16 here, then we can be able to write them as 33 upon 16. Okay, so यहाँ पे आ जाएगा 24 into 3.14 into 33 upon 16 as it is. So if we just reduce this by 8, so 8 2s are, and here it is 8 3s are, so that we can just be able to write this as, अब देखो 3.14 into 3 comes out to be almost, या चलो 3 into 33 अगर करेंगे ना तो वो 99 आ जाएगा. 99 can be written approximately to be 100. So that 100 multiplied with this 3.14 will become 314 actually, and that is to be divided by 2, and that is to be multiplied by 10 raised to minus 2 again, so that it becomes 157 into 10 raised to minus 2, which makes it as 1.57 Tesla, and it is very close to this 1.6 Tesla. So you can just select this D as a correct option. Okay, so just see the next question. What should be the amount of current through the ring of radius 5 centimeter, so that field in the center is equal to the Earth's magnetic field, which is of 7 into 10 raised to minus 15 Weber per meter square. Okay, that means suppose there is a coil here, and we want that the magnetic field at the center due to this current in the coil must be exactly same as the magnetic field due to the Earth, which is already given to be 7 into 10 raised to minus 15. इतना कम नहीं होगा वो, 10 raised to minus 5 होना चाहिए actually शायद. Let us take it as 10 raised to minus 5 only, because अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना कम तो नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट 10 raised to minus 5 के रेंज में ही होता है, ठीक है. सो और ये जो रेडियस दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक्चुअली. सो उससे यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है फॉर द रिंग म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए. And we want to find out the current through the coil, so that the magnetic field at the center will be same as the magnetic field due to the Earth. So we want this to be BE here. So that means current can be rearranged here. So current can be found out by 2 BE into R upon mu naught. That's it. So if we just work it out, then the current will actually be
फाउंड आउट टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 times of BE, where BE happens to be 7 into 10 raised to minus 5 into radius of the coil, which is actually going to be 5 centimeter. That means it will be 5 into 10 raised to minus 2. Okay, and here it is this value of 4 mu naught, where mu naught is given by the 4 pi into 10 raised to minus 7. Already we know it. So here we can just see that this 10 raised to minus 5 and 10 raised to minus 2 will just get cancelled with this 10 raised to minus 7. And here, if we just cancel out this 2, with this 4 leaving behind 2, then we can be left with 7 pi's are 35. So we can just get it as 35 upon 2 pi, where pi is nothing but 3.14, right? So just find out this approximately. So you can just get that 35 upon 6.28, right? So 35 upon 6.28. अगर 35 को 6 से भी डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ ही जाएगा. So you can just select it comes out to be okay, again we can just see 35 upon 6.28 comes out to be something 5 point something ampere, but there is no option like that, so we can just select this none of these as a correct option. Let us see the next one. An electron having the charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb and mass 9 into 10 raised to minus 31 kilogram is moving with 4 into 10 raised to minus 6 meter per second speed. क्वेश्चंस मुझे लगता है थोड़ा गलत है, तो ठीक है फिर भी कर देंगे. मास स्पीड ये 10 raised to plus 6 होना चाहिए एक्चुअली स्पीड जो है, ठीक है, मेक इट करेक्ट plus 6, and in the magnetic field of 2 into 10 raised to minus 1 Tesla in a circular orbit, the force acting on the electron and radius of circular orbit will be. ओके तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो हाँ सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी हमको चाहिए और फोर्स भी चाहिए. अभी देखो फोर्स के लिए तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास है, फोर्स इज गिवन बाय क्यू बी सिंपली. So we have this Q here, charge on electron already there, V velocity is already there, and magnetic induction is also already there. So we can just find out the force easily by using this formula here. So charge on electron is already given to be 1.6 into 10 raised to minus 19, and velocity is already given to be 4 into 10 raised to 6, and magnetic induction is already 2 into 10 raised to minus 1. Okay, so if we just multiply this, then we can get this 1.6 into 4 into 2. That means we are going to get it as 1.6 into 8. 16 8s are 128. So we can just get it as 12.8, and that is multiplied with 10 raised to minus 19. Minus 1 becomes minus 20, plus 6 means 10 raised to minus 14 here. Okay, so 1.28 into 10 raised to, this can also be written as 1.28 into 10 raised to minus 13, correct? Hai? So 1.28 into 10 raised to minus 13, these two can be the correct options. Okay, but अभी यहाँ पे हमको रेडियस भी निकालना है. रेडियस के लिए फिर देखो r is equal to, तो ये हमको फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, mv upon
QB करेक्ट है, ये भी हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है. So let us use this formula to find out the radius. Everything is already given. Mass of the electron is already there, that is 9 into 10 raised to minus 31. V, that is velocity of the electron, is already 4 into 10 raised to minus plus 6. And Q, that is a charge of electron, is actually 1.6 into 10 raised to minus 19. And B, that is 0.2, we can say. 2 into 10 raised to minus 1 matlab 0.2. Okay. So if we just work it out, first of all, just consider the powers of 10. Ye 10 raised to minus 19 just goes up and just combines with this 10 raised to 6, so that it becomes 10 raised to 25. And this 10 raised to 25 and 10 raised to minus 31 just makes it as 10 raised to minus 6 here. Okay, so 10 raised to minus 6 तो fixed है. Okay, अब यहाँ पे ये 9 into 4 बनता है 36, right? So you can write it as 36 here. And 1.6 into 0.2. Actually, it comes out to be 32, 0.32. Okay. So here it is going to be 0.32. Okay. So if we just cancel out by using this 4, the 4 9s are, and here it is 4 0.08s are, which can be written as 9 by 8 into 10 raised to 2. And this 10 raised to 2 just gets multiplied with 10 raised to minus 6, leaving behind 10 raised to minus 4 actually. So यहाँ पे बचेगा 10 raised to minus 4, और 9 by 8 का वैल्यू कितना होता है? 1.125. Okay, so it will be 1.125 into 10 raised to minus 4. So that means 1.1 into 10 raised to minus 4. Out of these two, only this one seems to be the correct option. So therefore, this A must be actually the correct option. That's the final. Okay. Yes, let us see the next question. Okay. Yes, take this question number 7 here. Yes, just read the question carefully. See, a circular coil having an average radius of 6 centimeter has 1000 turns. Okay. The current of 5 ampere is passed through it. Find the magnetic field at a point on its axis 8 centimeter from its center. So suppose this is the circular coil. Okay. Its radius is also given, and at the same time, its current is also given, and number of turns is also given. And we want to find out the magnetic field at a point at a distance of 8 centimeter from its एक्सिस और सेंटर. ये देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. और इस कॉइल का रेडियस जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. कैपिटल R is going to be 6 centimeter, and X, that is the distance of the point where the magnetic induction is to be found out from the center, is given to be 8 centimeter here. And current in the coil is already given to be 5 ampere, and number of turns is already given to be 1000. Okay, so we have already the formula for magnetic field due to the current carrying coil at a point along its axis to be simply
म्यू नॉट n I r square upon 2 times of r square plus x square the whole raised to 3/2, करेक्ट है? ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है. ओके, अब यहाँ पे यही फॉर्मूला क्यों यूज करना है, क्योंकि ये जो शॉर्ट कॉइल नहीं है, the radius of coil is not so small that it can be neglected as compared to the distance of the point where magnetic induction is to be found out. क्योंकि देखो रेडियस कॉइल का कितना है 6 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर. दे आर जस्ट कंपेरेबल. ठीक है, वो ऑलरेडी वहाँ पे ये नहीं है, तो कोई निग्लिजिबल नहीं है. अभी इस केस में देखो एक सिंपल सी बात ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमको ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये निकाल के लेना है, क्योंकि आफ्टर ऑल this distance is very much important in this case. And if we just consider this distance to be small r here, तो इस distance को अगर हम small r बोल देंगे तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये हम एक्चुअली स्मॉल r के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से. एक्चुअली वो स्मॉल r के फॉर्म में ही होता है, लेकिन हम इसको कैपिटल R और x के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की वजह से इतना वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. एक्चुअली हमको ये पता होना चाहिए कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है तो वो एक्चुअली आर स्क्वायर ही है, स्मॉल आर स्क्वायर मतलब, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम. एंड हेंस वी कैन जस्ट से दैट दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 3/2. अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 3/2 का मतलब क्या होगा? इट विल एक्चुअली बी आर स्क्वायर रेज टू 3/2. एंड आर स्क्वायर रेज टू 3/2 का मतलब क्या होगा? आर क्यूब ही बन जाएगा वो. तो एक्चुअली यहाँ पे इस पूरे टर्म के बदले आर स्क्वायर आर क्यूब आने वाला होता है. तो अगर हम उसको स्मॉल आर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो फॉर्मूला दिखने के लिए भी बहुत ही सिंपल बन जाएगा. ये देखो म्यू नॉट n I कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब, दैट्स इट. सो इतना सिंपल फॉर्मूला आपको मिलता है. एक्चुअली यही फॉर्मूला करेक्ट है, या यही फॉर्मूला एक्चुअली बेसिक है. इसको ही हम एक्चुअली स्मॉल आर को कैपिटल आर और एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की वजह से उतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं. ये कॉम्प्लिकेटेड उसी वजह से बन जाता है. बट दिस वन ओनली, एंड दिस वन इज मोर हेल्पफुल in this case here. So if we just try to find out this small r here by using the Pythagoras theorem, so we know that if the in right angle triangle, if one side is 6 centimeter, the other side is suppose 8 centimeter, then the third side will actually be 10 centimeter, and it can also be proved from using the Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जो बनता है आर स्क्वायर. तो अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, जिसको अगर हम आर स्क्वायर के साथ इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 100, मतलब आर इक्वल टू 10. ठीक है, सो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इस तरह से हमको मिल गया. ये हम ओरली भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो वंस गेट दिस एज 10 सेंटीमीटर, वी कैन जस्ट पुट इट हियर इन दिस फॉर्मूला, इन दिस केस हियर. तो यहाँ पे अगर हम डाल देंगे इस 10 सेंटीमीटर को तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा b इज इक्वल टू mu naught, which is going to be 4 pi into 10 raised to minus 7 actually, into number of turns, which is already given to be 10 raised to 3 here. Okay, 10 raised to 3 into current in the coil is already given to be 5 ampere. We can just put it as it is. And r square, where capital R is nothing but the radius of the coil itself. Okay, so this is 6 centimeters, 6 square. So here we can just put it as 6 square, but don't forget again to convert this centimeter into meter, so that we can just get 6 square means it will be 36, but centimeter का 10 raised to minus 2 उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 raised to minus 4 बन जाएगा. ओके, और जैसा कि हम जानते हैं डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे है 2 into r cube, and r is found out to be 10 centimeter here. That means 10 centimeter can be written as 0.1 meter, which means it will be 10 raised to minus 1 meter. Okay, तो इस तरह से उसको 10 raised to minus 1 meter लिख सकते हैं. Okay, so if we just put it here, then 2 into 10 raised to minus, अच्छा यहाँ पे 2 into r जो है तो वो यहाँ पे 10 raised to minus 1 हम पुट करेंगे, जो कि ऑलरेडी मीटर में है, और फिर उसका क्यूब कर देंगे, बस खत्म. जिससे वो 10 raised to minus 3 बन जाएगा, जो ऊपर जाके 10 raised to plus 3 बन जाएगा, और उसकी वजह से हमको यहाँ पे मिलेगा
next step में yes this 2 will just get cancelled with this 4 leaving behind 2 so that we can just get this simplified as अच्छा ये 2 जो है वो 2 इस 5 के साथ मिलके 10 बन जाएगा जो फिर इस 10⁻³ के साथ अच्छा तो 10⁻³ और ये 10⁻1 और ये 10⁻⁻4 सीधा कैंसिल हो गया ठीक है बाकी ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3 बनेगा और यहाँ पे ये 36 पाई बचा रहेगा ये देखो 36 पाई into 10⁻⁻4 will be left as it is 10⁻⁻4 okay and 36 पाई को अगर हम वर्कआउट करते हैं तो कितना मिलेगा देखो 36 into 3.14 into 10⁻⁻4 which actually comes out to be अभी 36 into 3 होता है 108 राइट सो 108 मतलब 100 के आसपास या 110 या के आसपास वो आंसर आ जाएगा तो वो तो हम समझ सकते हैं बट डेसिमल पॉइंट क्या होगा तो देखो अगर इसको हमने पकड़ लिया चलो 108 भी अगर पकड़ लिया अप्रोक्सीमेटली 108 into 10⁻⁻4 so if we want to write it as 1 point or 11 point या 10.8 into 10⁻⁻3 यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा उसको करेक्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंदर 10⁻³ दिख रहा है ठीक है सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस 11.3 into 10⁻³ टेस्ला एज अ करेक्ट ऑप्शन हियर एक्चुअली 108 जो है वो हमने इसलिए लिया क्योंकि 36 into सिर्फ 3 हमने किया एक्चुअली वो 3.14 है ठीक है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा तो जाएगा तो 108 से तो थोड़ा ज़्यादा होगा वो let us assume it as 113 actually so 113 into 10⁻⁻4 will actually be the option correct answer but 11.3 into 10⁻⁻3 can be the correct option here yes. Okay, let us see this question 4. Just read this question carefully. If a particle of charge 10⁻⁻12 coulomb moving along x-axis with a velocity 10⁻⁵ meter per second experiences a force of 10⁻⁻10 Newton in y-axis, then what is the minimum magnetic field B here? Okay, तो देखो suppose there is x-axis and y-axis. Okay, ये हमारा x-axis y-axis है और बोला है कि particle moves in the x direction with some velocity. So the velocity of the particle can be shown to be like this. So suppose the particle is moving in this direction here with the velocity which is given here already, that is 10⁵ meter per second. Okay, and experiences a force in y direction. So the force acting on this particle is going to be in the y direction here. So इस direction में उसके ऊपर force काम कर रहा है. अब देखो ये सिंपल राइट हैंड रूल हमको यहाँ पे अप्लाई करना है देखो ठीक से वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स वेक्टर है तो वो इस डायरेक्शन में है सो वेयर शुड बी द मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर सो दैट इफ यू जस्ट टर्न आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड क्योंकि हमारे पास F बार इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ B बार क्रॉस B बार ये फॉर्मूला है राइट तो V बार से B बार की तरफ फिंगर्स टर्न करने से हमको F बार का डायरेक्शन मिलना चाहिए सो इफ यू जस्ट यूज द राइट हैंड रूल B बार से B बार की तरफ फिंगर्स टर्न करने से अगर हमको फोर्स का वेक्टर मिलता है दैट मीन्स द मैग्नेटिक इंडक्शन शुड बी इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस फिगर सो मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी शोन टू बी डायरेक्टेड
in the inward direction like this, अंदर की तरफ ये होना चाहिए, ठीक है, अंदर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरह से, ठीक है. So this is the direction of magnetic induction. We can just find it out. So here is the inward direction में magnetic field directed होगा. अभी इसमें क्या है ना कि ये जो है x डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, y डायरेक्शन इस तरफ है, तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वी गेट द z डायरेक्शन टू बी आउटवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर. तो y x y z ये जो तीनों है वो हमेशा ट्रायंगल ये ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, राइट. तो ट्रिपलेट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ठीक से तो हमको मिलेगा कि जो z एक्सिस शुड बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स लाइक दिस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द फिगर. तो इस डायग्राम के बाहर की तरफ ये डायरेक्टेड होना चाहिए z एक्सिस जो हमारे पास है. दिस इज गोइंग टू बी द z एक्सिस एक्चुअली, ओके. बट ऑलरेडी मैग्नेटिक इंडक्शन इज गोइंग टू बी अपोजिट टू दैट, राइट. सो इसका अपोजिट मतलब वो क्या हो गया, माइनस z डायरेक्शन हो गया, वो माइनस z. और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो अब यहाँ पे magnetic induction B can actually be found out to be simply F upon QV. Actually, the formula is F is equal to QVB sin theta. But if you want to find out magnetic induction B here, then it will be actually F upon QV sin theta. And in order to get this minimum magnetic field, theta must be maximum. And what is the maximum value of theta? 90. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मतलब है हमको थीटा 90 लेना है, और थीटा 90 लेने से साइन थीटा 1 बन जाएगा. सो नो नीड टू राइट इट एज इट इज, एंड हियर वी कैन जस्ट रिप्लेस ऑल द वैल्यूज. फोर्स व्हिच इज गिवन ऑलरेडी टू बी 10⁻⁻10 न्यूटन हियर. सो ये 10⁻⁻10 डाल दिया इधर. फिर Q जो है, चार्ज जो है, तो दिया हुआ है ऑलरेडी 10⁻12 हियर. And B, magnetic induction is already given, not given, sorry V आना चाहिए ना यहाँ पे. yes, B के फॉर्मूला, B के बदले यहाँ पे V आएगा, QV actually. okay, V is already given to be 10⁵. yes, 10⁵. and if we just solve this further, then we can be able to get this 10⁻⁻12 goes up, plus 12 minus 10 becomes 2, and 2 minus 5 becomes 10⁻⁻3. so here it is going to be 10⁻3 Tesla. okay, and that is also in negative z direction, में होगा वो. so you can say 10⁻³ Tesla in नेगेटिव z डायरेक्शन. अब वहाँ पे उन्होंने नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं ऑप्शन में दिया है, सिर्फ उनको मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, ठीक है. चारों ऑप्शंस के अंदर z डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, तो मतलब इसका z डायरेक्शन तो हमको मिलने वाला ही है, ठीक है. बट इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी, and just select this as a most correct option here in this case. okay, yes, chalo theek hai. So let us stop here. More MCQs will just continue in the next lecture tomorrow, but just be prepared. 10⁻⁻12. okay, हाँ चल, हाँ ठीक है ना, फिर -20 तो लिया था, ठीक है. so let us continue this sums in the next lecture. so next lecture में हम थोड़ा सा level 2 के sums करेंगे. okay, thank you all of you.